हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने प्रीवियस में टेक्स्ट फाइल्स के साथ डील करना देखा और रीड राइट ऑपरेशंस को देखा। नाउ वी आर चेकिंग फॉर अनदर कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट फाइल, दैट इज अ सीएसवी फाइल, जिसका डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह को ट्रेन करने में। तो इस वीडियो में हम सीएसवी फाइल के बारे में देखेंगे, सीएसवी फाइल के साथ हम किस तरीके से डील करते हैं। सो हेयर सिंपली आई विल राइट डील विद सीएसवी का मतलब पहले क्या होता है ये समझना होगा हमें। सीएसवी स्टैंड्स फॉर सेपरेटेड। जो फाइल हमारे पास होती है वो उसमें जो डेटा एंटर होता है ना वो किस किस फॉर्म में होता है हमारा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्म। ठीक है। सो लेट वी राइट अ कोड, द फंक्शनैलिटीज आर सिमिलर, बट फॉर दिस स्पेसिफिकली वी हैव टू इंपोर्ट वन मॉड्यूल, दैट इज अ सीएसवी। वो जो सीएसवी मॉड्यूल है वो हमें हेल्प करेगा हमारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वो किस तरीके से करता है, देखिए हम सेम कोड बनाते हैं, हम एक एम्प्लॉय का डेटा रखने की कोशिश करते हैं, बट इंस्टीड ऑफ हैविंग txt फाइल, हमारे पास कौन सी फाइल है, सीएसवी फाइल है। और इसमें हम किस मोड में करेंगे, हम राइटिंग मोड में ही कर रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट कि हम जो न्यू लाइन है हमारा वो हम क्या करेंगे, दैट न्यू लाइन we suppose not change here and as f। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टू डू दिस वी हैव टू यूज द सीएसवी मॉड्यूल, और इसका राइटर जो है इस क्लास का, हम राइटर को यूज करके हम अपने फाइल के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास कर कर एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। दिस राइटर ऑब्जेक्ट इज हैविंग वन मेथड विच इज नोन एज द राइट रो। ये राइट रो मेथड होती है जो हमें हेल्प करती है सीएसवी फाइल पर लिखने के लिए, है ना। तो ये राइटर के प्लेस पर हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर राइट रो। इस राइट रो मेथड से सपोज आई एम टेकिंग सेम डेटा है और इसको लिस्ट के फॉर्म में मैं क्या लिखता हूँ, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, इट्स एम्प्लॉय नंबर, इट्स अ नेम, comma should be here। now e address, और ई सेल पर काम कर रहे थे, ई सैलरी पर ही काम कर। So this will write the first row। अब मुझे क्या करना है, I will simply take a same code here। हम यहाँ पर सेम कोड लेंगे और हमें केवल एक चीज का चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमने राइट लाइंस लिखा था यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, राइट रो। अब हमें सेपरेशन को देने की आवश्यकता भी नहीं है, हम केवल एम्प्लॉय नंबर पास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डिफॉल्ट सेपरेशन जो है वो सीएसपी लेगा। वी डू नॉट टू वरी अबाउट इट। दिस व्हेन आई रन दिस कोड, it is asking for the two records. Suppose employee number 1, here I'm at Rahul, employee salary suppose 44444, okay. Here is one attribute error, that is object has no attribute, right row, okay. So it should be a right row, writer row should not be there, it should be w dot right, yeah, it should be w dot right row instead of writer dot right row. What's 1 Rahul 5 2 so 666 and hit enter. Okay, so you can see the data written successfully. Let me check for the file. Yes, employee.csv फाइल बन गई हमारी, और आप देखिए इसमें जो डेटा आ रहा है वो कौन सा डेटा आ रहा है आपका, दैट डेटा इज द कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब आप जो मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा फाइंड आउट करेंगे इंटरनेट पर मिलेगा आपको, आप एमएल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, दैट डेटा विल बी द बेसिकली अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ओनली।
So this is what the way by which we can write in a CSV file. Similarly, write करते हैं हम तो हमें read करने की आवश्यकता भी होती है. So how to read data from CSV file. CSV फाइल से डेटा को यदि मुझे रीड करना है तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. किसका बनाता हूँ ऑब्जेक्ट? दैट इज सिंपली ओपन the emp.csv file, that is emp.csv file, and in which mode this should be open in the right read mode, sorry. And मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था उसी तरीके से CSV का मुझे रीडर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. फाइल का हमें रेफरेंस पास करना पड़ेगा. रीडर ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, when I print list r, you check it, when I print the list of r here, when I run this code, can you see whole data is here. अब मैं इस इंडिविजुअल डेटा को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली फॉर लाइन इन आर आई नीड टू डू. एंड सपोज इस लाइन के अंदर जो हमारा कोड है वो भी एक लिस्ट है ना. तो आई विल से फॉर एक्स इन लाइन, हर लाइन का जो डेटा है उसको. एंड व्हाट आई वांट टू print x. When I run this code here, so can you see this is a list r, and okay, this list r should be converted into the data form first. Is equal to list. I'm taking the data from here. Okay, so the same problem is here. Seek problem is here. I have to restart the kernel here. Let me run this code again. So CSV is not defined. Okay, CSV dot reader. Yes, so we have to import the CSV here. Okay. When I run this code for X inline, data are fine. Everything is done here. Let me check for the file. This emp.csv. Okay, so this file is containing no data. That is what the reason here. Let I write the record here. One record only. One Rahul 333333. Enter. When I read this file, run this code, so you can see the individual data is there. इसमें हमने प्रिंट लिस्ट आर करी है. यदि मैं चाहता हूं कि इस डेटा को मैं इंडिविजुअल को एक्सेस करूं, है ना, सो व्हाट आई नीड टू डू फॉर एवरी लाइन इन डेटा for x in this, why it's not accessible, print x. Okay, printing data. This data is a list of r. Fine. So ultimate goal, that it's not working for I think it's okay, it's not written. Now it's fine. And run this code again here. The output is same. Okay. Okay, so it is taking that data. Let I take it the data 1. Let I take it data 2. And here I am writing the data 2. When I run this code, okay, it's not picking the data. Here I am just simply I print data 2. Okay. So can you see this? The data 2 is here and the same data is here.
for I in data 2. So can you see now this is working fine? And for I in for X in I. X. Now you can see the individual data is here. The problem was that it was referring somewhere else data. So the code was correct, but now it's fine that we have started restarted the kernel here, and we are having this data 2 here, and finally we are able to access the individual data as per the requirement. So this is what the dealing of CSV file in terms of reading and writing the data. So for this video, it's all from my side. Thank you.